I will check. Now we should be live. Okay, so let's start. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़र्दा पर एक और फेसबुक लाइव सेशन के साथ मैं और सलमान तूर आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अहमद राफ़े आलम साहब। अहमद राफ़े आलम साहब एक एनवायरमेंटल लॉयर हैं जो कि बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ है। उसके अलावा आप एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। आप करंटली एयर क्वालिटी एशिया के एडवाइज़र हैं और आप फॉर्मरली पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल और पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल के रुकन भी रह चुके हैं। और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो वैसे तो वाइड रेंजिंग है, फ्रॉम लॉ टू एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट और आपका जो कोर वर्क है वो एनर्जी और एनवायरनमेंट सेक्टर में है। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली का हम आजकल हर तरफ सुनते तो हैं, लेकिन ये मसला कितनी संजीदगी इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ पर खड़े हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो मसाइल हैं, क्या हम उनके सलूशन की तरफ जा रहे हैं या ये मसाइल मज़ीद बढ़ रहे हैं वक्त के साथ। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए और बिलखुसूस ये जानने के लिए कि हम आगे किस तरह बढ़ें और किस तरीके से इन ख़तरात से निपट सकते हैं, यानी हम एडॉप्टेशन के साथ मिटिगेशन को भी अच्छी तरह समझें और फिर हम एक्शंस लें। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद राफ़े आलम साहब से कि वो जो है वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू राफ़े आलम साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर आसिम, फरदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, बुलाने का, दावत देने का कि मैं मौसमी तब्दीली और पाकिस्तान के बारे में चंद अपने ख्यालात जो हैं उनका आपके साथ इजहार करूँ। प्रेजेंटेशन तो जी, मौसमी तब्दीली के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये पिछले 1.5 साल जो हम कोविड लॉकडाउन के अंदर फंसे रहे हैं, एंड वी हैव सीन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। अब हम न्यू नॉर्मल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हमारी जिंदगी यहाँ पिछले 1.5 साल में काफी तब्दील हुई है। बट द थिंग इज दैट द enormous disruptions to global economics and to the social affairs of people around the world have been disrupted at huge scales. But my point here is that जो हमने इस वक्त मुश्किलात या चीज़ें देखी हैं, it's nothing compared to the challenges that we are facing and going to face of climate change. तो पहले जी, what is climate change? Climate change is the burning of greenhouse gases. Greenhouse gas क्या है जी? जब आप जमीन से कोई फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, उसको निकाल बिजली के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये गैसेस जो पैदा होती हैं, they heat up the Earth's atmosphere, as this time lapse of global heat anomaly shows you over the last 150 years that the Earth is resultingly heating up. ये देखिएगा 2019 तक we are now, and actually 2020 and 2021 were the hottest years ever recorded in sort of history. इस ग्रीन हाउस गैस को मेजर करने के लिए मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वी नो दैट टेम्परेचर्स आर राइजिंग, मगर उनको सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की इंटेंसिटी को नापने के लिए हम ये शिद्दत देखते हैं कार्बन कॉन्सेंट्रेशन की। व्हाट इज द कार्बन कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर? राइट नाउ इन 2021 द मानु लाओ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई has posted that the Earth's atmosphere has about 420 parts per million of carbon in the atmosphere. 420। अब इस फिगर को अगर हम देखें, ये चार्ट पे अब 2020 के करीब, you can see that we are close to 420 parts per million. But what's interesting is that when you compare this to previous experiences on Earth, we have to go back not 1,000 years. ये linear chart नहीं है, ये logarithmic chart है। तो 1000 साल नहीं, 10 लाख साल नहीं, हमें तकरीबन 2 करोड़ साल पीछे जाना पड़ता है। About 20 million years we have to go back to find an incident where there has been 420 parts per million of carbon in the atmosphere. And that was the Ecocene. That was a global extinction event when oceans were approximately 10 to 12 feet higher than they are today. That's startling.
This is, and to put this into context, human civilization, us as Homo sapiens, have not existed on the face of planet Earth for more than 2 million years. So this intensity of carbon concentration is actually outside the understanding of human civilization. आप पूछ रहे थे कितनी संजीदगी से ये मसला आगे बढ़ गया है? Let me explain. ग्रीन हाउस गैसेस से टेम्परेचर बढ़ता है और इस चार्ट से हमें नजर आता है दैट कंपेयर्ड टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, यानी कि 150-200 साल के मुकाबले में जो टेम्परेचर है अर्थ का वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1.1-1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म है बनिस्बत प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. 1.1 and 1.2 degrees only on average. And when I say on average, it means there are parts of the earth that are hotter than 1.1, 1.2 degrees centigrade. Sindh, for example, is an example. And there are parts of the earth that are actually cooler. But on average, we're only 1.1, 1.2 degrees warmer. And at this level, we are seeing apocalyptic forest fires in California. This was last year. And if you remember, in December, January of 2019 and 2020, there was an unbelievable forest fire in Australia that actually wound up killing over 800 million animals, cattle, most of whom couldn't escape the flames and most of whom's habitats were destroyed by the fires. But ये तो हम तस्वीरें देखते रहते हैं बाकी दुनिया में क्या हो रही है. Let me tell you a little story about what's going on in Pakistan with climate change. 2018 में मुझे याद है कि अप्रैल में 2 दिन पंजाब में बारिश हुई, 2 दिन सिर्फ. और अप्रैल में आमतौर पे बारिश नहीं होती because this is very damaging for the wheat crop. फसल खड़ी हो जाती है और इस पे जब पानी पड़ता है तो it falls down, it becomes unusable. And these 2 days of rain in the middle of April 2018 devastated a substantial portion of Punjab's wheat output. And while there were political problems in the production and the distribution of wheat in 2019, and we wound up importing wheat, there was a wheat shortage on account of this climate event. So climate events are coming very close to food shortages in Pakistan. अगर आपको याद है चंद साल पहले 2015 में कराची में एक हफ्ते के लिए टेम्परेचर बढ़ गया था. It was a heat wave event, much like the heat waves we're seeing in the United States just now, as a matter of fact. और इस एक हफ्ते में when the temperature went to over 46 degrees centigrade, nearly 1,400 people died. Now, this is what the face of a lot of climate change is going to look like in Pakistani cities moving forward. Because the human body can't withstand temperatures for much longer, for very long periods of time once the temperature goes beyond 46, 47 degrees centigrade. And the people who are going to be affected by these type of extreme heat events are people who don't have access to electricity or to insulation. And this is the vast majority of the urban poor that live in Pakistani cities that are now under dire threat of climate change. Many of you must have read now of the rather amusing name Lahoris have given to the air pollution problem that they face every single winter. We now call it the smog season. Now this is alarming because for a relatively low industry country, having air pollution at the levels we see in Pakistani cities, on average you lose about 2 years of your life expectancy on account of air pollution in Pakistani cities. And in Lahore, because yahan shiddat zyada hai, it's recorded to be as many as 5 years of life expectancy that are lost. These are remarkable figures for a non-industrial country. And don't forget, most air pollutants are actually greenhouse gases. And this is another face of what the climate crisis looks like in Pakistani cities. It's erasing the lifespan of our citizens. Just last year, the government of Pakistan actually declared a national emergency because of an attack of locusts through Sindh and parts of Punjab. Now, these locusts have as much to do with climate change as the forest fires that I showed you pictures of just a few minutes ago. Because locusts breed in wet winters. And in the last 3 years, we've found that increasingly wet winters, especially over the Horn of Africa, that's the east coast of Africa near Somalia, have led to locust swarms and their populations breeding again and again and emerging into these sort of emergency levels of locusts. And these locusts have devastated crops throughout Oman, throughout Iran, bits of Pakistan, and also bits of India.
And it's not a light subject that a national emergency, no less, was declared in Pakistan on account of them. And all of you will probably have read about the 2 days of rain that fell in Karachi last year in July. 2 days of rain, sorry. It was a once in 100 meteorological event. 2 days of rain wiped out and brought the largest city in Pakistan to a standstill for about 2 weeks, and revealed the weakness of municipal infrastructure in the face of climate challenges such as this. Because mark my words, if this 2 days of rain was a once in 100-year event, I assure you, we will probably see a worse rain in the next 5 to 10 years. And interestingly, about a year from this occurrence, this particular rain, we are now reading of reports of evictions in a Gujar Nala in Karachi. It's a stormwater drain in Karachi, which is a direct result of an attempt to try and improve the municipal services in Karachi. But what's happening is that thousands of people are being evicted from their homes as a response to this climate event. And what we are seeing is climate injustice in action, with the eviction of these poor people without a proper resettlement plan. Now, all these things that I've talked about, from locusts, to air pollution, to heat waves, to the fact that there are evictions being ordered by the Supreme Court, all fall within the larger rubric of how climate change is affecting Pakistan and Pakistanis today. The next question is, what has the world done about climate change? Well, back in 1992, the international community convened in Rio, it was called the Rio Declaration, and signed the United Nations Framework Convention on Climate Change. The objective of this convention is the stabilization of greenhouse gases, those things that cause global warming, so at a level so that, any dangerous anthropogenic interference in the climate system. Just stabilization of greenhouse gases is the objective of the international treaty. And this treaty has sought to be implemented through instruments such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Let me speak about this for just a second. Because the Kyoto Protocol seeks to restrict global warming to no more than 2 degrees centigrade compared to pre-industrial levels. That was the aim, कि अगर हमने greenhouse gases को stabilize करना है, we will try and keep temperatures under 2 degrees compared to pre-industrial limits. But there is no safe amount of climate change, because I've told you at even 1.1, 1.2 degrees of warming, the type of extraordinary difficulties that are being faced by Pakistanis and people around the world. And it's because of these reasons that actually in 2016, the international community convened again in Paris and increased the ambition of the Kyoto Protocol to make sure that global warming would not exceed 1.5 degrees of warming. Not 2 degrees, 1.5 degrees of warming. So that's how the international community has responded to this. As far as Pakistan is concerned, when it comes to trying to achieve the objectives of the Paris Agreement and the UNFCCC by stabilizing greenhouse gas emissions, let me show you that under the Paris Agreement, we submitted that we would be increasing our total greenhouse gas and carbon emissions in Pakistan by 400% between 2015 and 2030. This is not a high ambition to reduce greenhouse gases by the Pakistani state at all. In fact, Pakistan, because of CPEC and its coal-fired energy projects, is increasing its greenhouse gas emissions. और यहाँ कहा जाता है कि Pakistan is not a very large greenhouse gas emitter, and this is true. 2015 के अंदर ये 405 million tons of CO2 equivalent की जो exhaust निकल रही थी, puts Pakistan somewhere at 130 in the list of countries that are climate polluters. But if we increase our emissions by 400%, it puts us where Japan is today, at number 9 on the list of climate polluting countries. This is the ambition Pakistan has actually put forward at the international community, and I want to raise this in front of Farda. But not just that, you see, whilst the ambitions of the UNFCCC were to stabilize greenhouse gas emissions, the reality is that since 1992, greenhouse gas emissions have actually blown up. We have produced more greenhouse gases since 1992 than the Earth produced before. In other words, international agreements have failed. They have failed to stabilize gas emissions, and we continue to hurt towards a climate catastrophe. I need to put this into context, because as greenhouse gas emissions increase,
global warming will increase. 2 degrees of warming, we'll start to see global crop failures. At 3 degrees of warming, there's not a tree alive that can survive the increased amounts of heat. At 4 degrees of warming, we're talking truly apocalyptic changes in how civilization works. On the way to Jamshoro, where I'm speaking to you from, I was reading a report of climate change in the Indus Delta by Dr. Ghulam Rasool, who was the chief Met officer here in Pakistan before he joined ICIMOD in Nepal, which is the major research organization on climate change organized by the SAARC countries. And in his report that I was reading, he predicted a temperature increase of about 5 degrees centigrade in the Sindh Indus Delta. I cannot begin to describe to you the devastating impacts of such high degrees of warming if it happens this year or within this century. You know, just to put this into context, the difference between 1.5 and 2 degrees of global warming has been predicted to be approximately 150 million deaths, mostly in Asian and African cities on account of air pollution by their transport and energy sectors. 150 million deaths is more than 4 times the number of people who died in World War I and World War II put together. And with the amount of greenhouse gases we have in the atmosphere today, authorities such as the United Nations IPCC foresee that we will probably breach the 2 degrees of global warming limit somewhere in the middle of next century. Not next century, next decade. We have less than 15 years to be able to do something, otherwise start witnessing some of the most devastating annihilation that the human civilization has ever faced. What can we do about climate change if this is the trajectory we're on? And I'd like to speak to you about this because I firmly believe that climate change is not the result of just our own individual actions. It's more than that. They are large economic and social drivers of climate change. We need to understand those before anyone can do something about climate change. So ये 4-5 चीजें हैं क्या? They are capitalism, patriarchy, colonialism, consumerism, and the fossil fuel economy. And I want to explain each one of these things because otherwise you might excuse me of being a feminist socialist, which I am, but I want to explain these terms to you. Capitalism, sarmayadari jo hai, is a means by which the global economics works, but it's also a way by which there is an unaccountable exploitation of resources, natural resources, and human labor. An unaccountable extraction of resources and abuse of human labor. That's what I believe capitalism is, because it's figures like this or a newspaper article like this that illustrates the point so well. ये Guardian का article है 2013 का sorry, जिसमें कहते हैं there are only 90 companies on earth that are responsible for 2/3 of all historical greenhouse gas emissions. 90 companies. This sort of anomaly where so few people make immeasurable amounts of money, full in the knowledge of what they're doing to the entire world and to the future of human civilization, is a result of capitalism. If you continue with unaccountable exploitation of resources, you get these sorts of anomalous results. Not just that, capitalism throws up other sorts of anomalies. This is a chart from NEPRA, which is Pakistan's energy regulator and which sets energy tariffs for different types of energies produced in Pakistan. And right now in Pakistan, this was a report that was published on the 28th of March last year by the Center for Research in Environment and Air, found that using NEPRA's own figures, the price of renewable electricity in Pakistan, that's wind and solar, is cheaper than all other types of fossil fuel electricity, including hydroelectricity, including coal-based electricity. So renewables are not only environmentally friendly in Pakistan, they are financially more sensible. So मुझे समझ नहीं आती that with these sorts of figures, and only capitalism can explain why, in the face of such figures, Pakistan continues to execute long-term fossil fuel, coal-based energy contracts with China and with other international donors, international investors. It's this sort of anomaly, the unaccountable extraction of resources, which throws up the types of problems we're seeing in climate change. And the same is true with patriarchy, which is a system of exploitation of labor and of resources where the man is at the center, creating a systemic discrimination against women. Women are more vulnerable to climate change.
And without women as being part of the solution to the climate crisis, we will not have a just and equitable climate system. Colonialism, especially settler colonialism, has been responsible for the destruction, again, the unaccountable destruction of nature and the abuse of labor as a driver of climate change. As has been consumerism. और consumerism में मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ. Firstly, it's our habits of, for example, drinking coffee. मैं इधर coffee पाकिस्तान में पीता नहीं, but the idea that I need a pick-me-up that has to be flown thousands of miles on a fossil fuel emitting aeroplane just so I can wake up in the morning is ridiculous. These sorts of consumerist behaviors have to change. If I want to wake up in the morning, I should just go to sleep earlier. But beyond that, I want to point out that natural resources or environmental resources aren't consumed equally by people on Earth. मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, and although I'm environmentally friendly, my carbon footprint is probably tens of times larger than someone who lives in rural Pakistan. And likewise, my carbon footprint is nothing compared to the richest 10% of the world. The richest 10% population of the world consumes nearly 50% of the Earth's resources. This is consumerism, the disproportionate use or abuse of natural resources by a select few that know full well what they are doing and yet continue to hurtle the Earth towards a climate catastrophe. और यहाँ जब लोग कहते हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ गई है और इसकी वजह से हमें माहौलियाती और मौसमी तब्दीली की मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, you have to say no, not at all. The per capita consumption of resources is not equal. Bill Gates and the billionaires of the world consume far more than someone in Thatta or someone in Badin or someone in rural Pakistan. And you cannot put the blame of climate change on the poor who have not done the same amount of consumption as the rich. Because the effects of climate change are not felt country by country, but they're felt on a scale of affluence. The poorer you are, the more vulnerable and less resilient you are to climate events. And that's why Pakistan is such a climate vulnerable country, mostly because we're extremely poor. Now, moving forward, I'd like to spend a few minutes about what we're going to need in the face of the climate crisis. Because जैसे मैंने कहा, the increasing temperatures around the world are going to start very rapidly putting stress on food production, putting stress on the existence of natural resources, and then eventually putting stress on civilization itself. And here let me explain. Climate change is not perhaps going to kill everyone on Earth. What climate change is going to do is it slowly, if not slowly, rather rapidly, it's going to remove those threads and strings of civilization which have been built over centuries so that human beings like you and I can speak to each other and interact with each other without killing one another for food. Those systems of civilization are slowly going to start disappearing as resources become scarce. And in a civilizational collapse like that, what us humans need more than anything else is empathy, hamdardi, the ability to be able to identify the humanity in another human being. We are going to need this more than all the other science and all the other solutions that we have. We need to believe in the humanity of each other. And this requires not just a knowledge of what climate change is, but a deep understanding of what other people are feeling. Nurturing relationships will be a result of all of that. These are my words. This is my experience. Dr. Sahibs, Farda, thank you so much for inviting me and allowing me to speak. I would love to be able to answer any questions that you have. Thank you very much, madam. MashaAllah. Zabardast, what a talk. So, राफी साहब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अब ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन भी हमारे पास क्वेश्चंस आना, मगर मैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप देखें, एक चीज जो हमें नजर आती है कि नॉर्मली जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो हमें वेस्ट की तरफ देखना पड़ता है कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। मगर एक चीज जो इस तरह के स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स में काफी ज्यादा कंसिडर करनी चाहिए वो ये कि क्या हम डेवलप वर्ल्ड का एक सॉल्यूशन उठा के डेवलपिंग वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं, क्या वो काम करेगा, क्योंकि डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। ये सब चीजें जो आपने बात की, ये इन द एंड ऑफ द डे सोशल बिहेवियर पे, एजुकेशन, हर चीज से इंटरलिंक्ड है। और वहां
वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, या किस तरह, क्या हम एग्जांपल्स ला सकते हैं वहां से? क्या एज इट इज वो चीजें चल सकती हैं? लेकिन द ग्लोबल नॉर्थ या वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप समझ लेना, इनका जो डिस्कोर्स है क्लाइमेट चेंज पे, ये काफी जैसे इन्होंने काफी इस पे काम किया, एंड इट्स बिकम क्वाइट फोकस्ड. You know, the international global north response to climate change is to mitigate, zero carbon की तरफ आएं, renewable energies पे कुछ करें, and to start socially stigmatizing people and companies and economies that burn fossil fuels or are irresponsible towards climate change. और इस discourse का आप एक poster child is the wonderful Greta Thunberg, who has been inspirational all over the world and has galvanized climate movements around the world. अगर ये एक किस्म का framework, I want to sort of say that this is, it typifies and exemplifies the discourse of the global north. अब पाकिस्तान के अंदर जी, it's not a very large greenhouse gas emitter, ठीक है, हमें मिटिगेशन का इतना मसला नहीं है. पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जब होती है ना, तो कराची शहर के अंदर 2 हफ्तों के लिए बिजली नहीं है. पाकिस्तान में जब क्लाइमेट चेंज होती है ना, लोगों को फिर खुराक नहीं मिलती. The impacts on the global south of climate change are very different from how the climate debate has been framed and is so well argued in the global north. अब इसकी चंद वजूहात है. मैं पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ. मैंने जब ये माहौलियाती काम शुरू किया 2007-8 के अंदर, तो at that point I was one of the only environmental lawyers in the field. अभी भी बहुत कम है. तो हमारे साथ जो दोस्त साथी होते थे, वो भी नए फील्ड के अंदर आए थे. There were very few specialists जो कि मास्टर्स किया हो क्लाइमेट चेंज के अंदर या एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर. हमारा जो माहौलियाती कानून है वो 1997 से है. तो HEC के अंदर जो कोर्सेज आए हैं पाकिस्तान में एनवायरमेंट और क्लाइमेट के हवाले से, वो 2000 के बाद आए हैं. So by the time I started my sort of journey on environmentalism in the mid 2000s, the HEC actually hadn't produced any graduates by then. तो पाकिस्तान की उस वक्त मौजूदा पॉलिसीज जो बन रही थी, they were being produced by people who weren't from Pakistan, because हमारे पास technical capacity नहीं थी. हम फिर ये करते थे, because the Ministry of Environment and the Ministry of Climate Change needed expert opinion, हम जाकर ADB या World Bank या EU से पैसे लेकर हम एक टेक्निकल एडवाइजर बुला लेते थे. 3 महीनों के लिए बंदा आकर पाकिस्तान का जायजा लेके हमें बता देता था कि आपके क्लाइमेट के मसले ये हैं और आपको ये करना चाहिए. And I'm not saying that these people were incorrect. I'm just saying that because we had a lack of capacity, we had to ask outsiders to come in and tell us what our problems were. और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की environmental policy या climate policy की बुनियाद जो है, वो एक तो अंग्रेजी जुबान में, ठीक है जी, और दूसरा it's an outsider's perspective. Exactly. अब हुआ ये कि मेरे एक्सपीरियंस में जो पिछले 15 साल के अंदर HEC में अब इदारे आ गए हैं, बाहर से भी ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के अंदर अब काम करें, ना सिर्फ ग्रेजुएट्स बट नाउ यू हैव पीपल विद 10-12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि अब अगर आप कोई जायजा लेना चाहें पॉलिसी लेवल पे माहौलियाती तब्दीली में या माहौल के बारे में, you can literally put your ears to the ground and hear the language of Pakistan being spoken rather than a foreigner talking to you. So for me, the real challenge and the real excitement of trying to work on climate issues is to listen to what local voices on climate change are. हमारी पाकिस्तानी आवाज क्या है, हमारे यहाँ climate change क्या है, और फिर उसको फिर galvanize करने की और उसको फिर focus करने की कोशिश करेंगे, so it becomes as finely tuned as the Greta Thunberg message. I mean, that's the aim. But it has to be it is very different. और दूसरी बात ये है कि global south के अंदर जो population है globally, it's much larger than the minority global north. And so at some point, the international global climate debate must listen to the global south, to people like us, because असर हमें पड़ रहा है. शुक्रिया सर, मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया आपने. अच्छा, आपने बात की HEC की और हायर एजुकेशन जो कोर्सेज और डिग्रीज की, मगर जैसे मैं आपकी भी एक वीडियो देख रहा था, शायद वो आपने अपने बेटे के साथ बनाई कुछ अर्सा पहले, तो आई मीन आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो स्कूल लेवल पे इस चीज के लिए प्रॉपर क्या किया जा रहा है, अगर कुछ किया जा रहा है, क्या हमारे पास ऐसे वो हैं चैप्टर्स हैं बुक्स में जहाँ पे हम ये चीज हाईलाइट करें, और क्या उनको उस तरह पढ़ाया जा रहा है? अगर आपको वो थोड़ा बहुत. नहीं, देखिए बहुत चीजें हो रही हैं. मैं हर कॉलेज में एनवायरमेंट सोसाइटी है,
हर स्कूल के अंदर एनवायरमेंट सोसाइटीज हैं। मुझे तकरीबन हर हफ्ते एक या दो दफे किसी स्टूडेंट ग्रुप से इनवाइट मिलता है कि हमसे बात करें, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग दैट पीपल आर फोकसिंग ऑन दिस। आई मीन, मैं जब बच्चा था माहौल का तो तस्वर नहीं होता था, बस ये है कि इधर उधर चीजें साफ रखा करो, ठीक है, और हाथ को साफ रखा करो। That was about it. That was the end of the civics lecture. But now there's a real drive on personal responsibility, on recycling, and this is good, on tree plantation and reconnecting. Because देखें, एक चीज पाकिस्तान में जो हुई है, which has happened in the last 35-40 years, is that we've transformed from a rural sort of agrarian economy and society to an urbanized society. And अगर आप किसी शहरी बच्चे से पूछे कि चिलगोजे कहाँ से आते हैं, they'll tell you वो दुकान से आते हैं. One of the disadvantages of living in a city is that you become removed from your environment. You see, you're not as aware or connected to it. And because Pakistan is increasingly urban, my fear is that so many of the younger generation don't have that connection to nature that people in far-flung areas, the northern areas or rural areas have. So, ये एक मुश्किल आ रही है. But beyond that, I think the other language that I would like to hear taught in Pakistan is not just what you can do in terms of the technical things. ये साफ रखो, पानी कम इस्तेमाल करो, आदतें बेहतर करो. But to refine the concept of justice, of what climate justice is. अभी जो मैंने जिक्र किया, ये गुजर नाले से लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ये डर है कि अगर दोबारा बारिश होगी तो कराची के इलाके जो हैं वो फ्लड हो जाएंगे. मगर बात ये है कि लोगों को घर से नहीं निकाला जा सकता. ठीक है जी, इसमें नाइंसाफी है. The response to climate issues must also take into account climate justice and not just the enforcement of law. और ये आइडिया काफी फ्रेश है. Climate justice is a relatively new idea, and I wish this was something taught as part of civics to younger generations of Pakistanis. राफी साहब, राफी साहब, थैंक यू फॉर द इंसाइटफुल टॉक. मेरा सवाल जो है, आपने जिक्र किया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का. ऑफ कोर्स, यानी हम अगर देखें ओवरऑल तो ग्लोबल साउथ में जो वो डायनेमिक्स और प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन मेन एक फैक्टर है, लेकिन यहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा जो वो कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ में जो कि हम कह सकते हैं कि हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में, मिसाल के तौर पर चाइना और इंडिया, लेकिन वहाँ भी हमें जो है वो कंक्रीट एक्शंस नज़र नहीं आ रहे. ख़ासतौर पर जिस तरह आपने जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात की थी कि पाकिस्तान चाइना के साथ इतने मेगावाट के एनर्जी प्रोजेक्ट में, और जो कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे बेस करते हैं, तो हम मुझे लगता है कि जो ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान एक छोटा कंट्री, उसके अपने मसाइल है, लेकिन ये गवर्नेंस रिलेटेड इशू भी है कि क्लाइमेट गवर्नेंस की जो है वो जो लोग पावर में बैठे हुए हैं ऊपर, उनको खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है. मिसाल के तौर पे चाइना में, बीजिंग में जो स्मोक का इशू है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है. उसके बावजूद अगर उनकी पॉलिसीज़ सिर्फ डेवलपमेंट फोकस हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पर उन्हें पता है कि इनको सर्वाइवल के लिए डेवलपमेंट चाहिए, और वो we are sort of forced into signing these kind of contracts. So how do you see this, contradiction? Well, I was in Washington DC for a meeting on India-Pakistan transboundary air pollution issues, and I met somebody from China, Mr. Ma Zhong, who worked on the Chinese air pollution. He's the chief economist of the Bank of China, and he was talking about the efforts China had put in to improve air pollution in Beijing and other major cities. और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, बात ये कि एक तो नियत एक है, there is a political will to do it, and there is some movement towards improvement as well. So although the Chinese model is difficult to sort of emulate because this level of state ownership and control of enterprise is much different than a place in Pakistan. I mean, if the Chinese authorities say फलाना करो तो उनकी इंडस्ट्री वो करती है. जब पाकिस्तान हुकूमत कहती है कुछ करो तो हमारे सेठ कुछ और सोचते हैं. So it's slightly apples and oranges in the comparison. But what's happened since is that when the Trump administration moved out of the Paris Agreement, which, by the way, for a country to step out of an international agreement is a breach of a treaty. And I don't think the international community has said enough of condemnation towards the United States for essentially breaching and violating an international treaty of such importance. But when that happened in 2017 in Davos, President Xi of China asked the United States stepping out of Paris, it would be China that takes the moral authority position on global climate change. And yes, since then, the Chinese authorities have announced
a plan of going to net zero by 2060, which some people hail as ambitious and some people say is too little, too late. मगर वो नीयत जो है आपको नजर आ रही है. So there are some positions being taken over there. Now, as far as Pakistan and China is concerned, मैंने फिर माजूम से पूछा कि भाईजान एक तरफ आपके सदर जो है वो कह रहे हैं कि they're taking a moral authority on climate change, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को सेकंड हैंड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बेच रहे हैं as part of a development package. तो इसके अंदर मुझे बताएं, you know, what's going on. तो माजूम ने सबसे पहले ये कहा कि देखें, हमने आपको नहीं बेचे, आपने हमसे मांगे थे. Which is important because you see the 2013 election in Pakistan, the general election, अगर आप पीछे खड़े होकर उसका mandate देखें, the mandate was बिजली दो, because 2010 से 13 तक there had been an energy crisis in Pakistan, and the elected representatives at that time basically said कहीं ना कहीं से बिजली लेकर आओ. Dams को 20 साल लगते हैं, solar was still too expensive, all the new plants were already, you know, purchased up by other people. और फिर रहता क्या है is the second hand coal plants that the Chinese are now trying to get rid of because उनके शहरों के अंदर pollution बहुत ज्यादा है. And so we got them, right? अब देखें कि 2015-16 से चीनी प्लांट्स लगने शुरू हो गए. पंजाब में एक साहिवाल के अंदर प्लांट लगा है, which was, you know, it was supposed to have been built in 18 or 22 months, which is some sort of global record. मगर अब 1.5-2 साल बाद अगर आप वहाँ के रहायशियों से पूछें तो बीमारियां पैदा हो रही हैं, पानी की कमी है, and all sorts of problems are originating. And what we're going to see, this is my prediction, that as a result of these investments in fossil fuel in the last 5 to 10 years, it's not just energy, but I think things like health and pollution are going to become part of the electoral process. कि अब जी बिजली तो आपने लगा ली है, लेकिन अब हमारे फेफड़े बचे और हमारी हवा जो है वो बेहतर हो. So we are going, I believe we're going to see an improved articulation of environmental issues in Pakistan. Magar that's a catch-22 as well. Because when we do get that level of political awareness and elect a government that wants to improve energy efficiency and air quality, उन्होंने renewable energy के लिए और solar energy के लिए कहाँ जाना है भाईजान? वो China जाएंगे. And this is known as a double tap. You're selling two things to the same person. आपने उनको कोल फायर्ड बेचा और आगे जाकर आप उनको सोलर बेच रहे. So in many ways I see Pakistan walking into this classic दुकानदार trap of you know किसी को आगे लगाना basically, and that's the catch-22 in me also seeing our political discourse evolve. अच्छा रफी साहब, आपने जो है वो catch-22 की बात की, इसी तरह हमने ग्लोबल साउथ की बात की. अगर ग्लोबल नॉर्थ में हम देखें तो फॉर एग्जांपल देयर इज अगेन अ catch-22 व्हिच आई सी, और लोगों का इस पे एक एतराज़ भी. मिसाल के तौर पे हम जा रहे हैं कि environmental protection, so we get rid of the vehicles and we go towards electric vehicles. इसी तरह हम सोलर एनर्जी पे जाते हैं, हम बैटरीज जो हैं वो ऐसी बना रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हों. लेकिन इन तमाम के लिए फॉर एग्जांपल अगर बैटरीज के लिए हम माइनिंग को देखें, सोलर इंडस्ट्री में, खुद सोलर इंडस्ट्री में R&D में रह चुका हूँ, अब मैं आर्किटेक्चर ग्लास इंडस्ट्री में R&D में हूँ. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक प्रोडक्शन में जो यूजेज है वो स्टिल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं. अगर हम माइनिंग से लेकर एनर्जी कंजम्पशन टू मेक प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो मुझे यहाँ भी catch-22 लगता है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, माइनिंग किस तरीके से हो रही है उन मटेरियल्स की जो कि यानी जहाँ से भी जिन इलाकों से हो रही है किस तरह यूज़ कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि नॉर्थ में ऑन दी सरफेस आपको लगता है कि एफर्ट्स हो रही हैं, लेकिन अगर उसको हम डीप डाउन जाके देखें तो वो हमें लगता है कि उसका जो इफेक्ट है वो कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका होगा नहीं. I think Dr. Saab, your example of the electric vehicle captures this catch-22. तो एक तरफ हवाई आलूदगी पैदा हो रही है, तो उसके, and that's because you have combustion engines that burn fossil fuels. तो उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में या उसके रिस्पांस में आप कह रहे हैं कि जी देखें एनर्जी, ये ई गाड़ियां हम प्रोड्यूस करेंगे, and this is touted as the solution to the pollution problem. But the problem isn't pollution actually. The problem is cars themselves. The fact that we have cars. We have cars because we have allowed our cities to become so large, because we like to live in these large sprawling homes with extra space, that we need cars to be able to buy eggs in the morning and to drop our kids to school. It's even if the entire world moved on to electric vehicles and we had renewable electricity for all of them,
well produced, proper materials, right, you would still have congestion and you would still have deaths by automobiles. So really the problem there is not the electric vehicle, it's the consumerism and the way we design our cities that's the driver over here. And that's why I talked about systems. You know, we could talk about individual things themselves, but when you step back again, these problems fall into the 5 systems I talked about: capitalism, patriarchy, consumerism, colonialism, and the fossil fuel economy. So ये consumerism का मसला है. We have to consume less and we have to change the way we plan our cities, frankly. जी, राफी साहब, एक कमेंट और एक फिर मेरे पास क्वेश्चन है. एक मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान में था, तो अब क्योंकि करीम का दौर है, नॉर्मल टैक्सीज खत्म हो गई, तो जो ड्राइवर था वो मेरे ख्याल में किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था. आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट के किस तरह लोग लाइक हम बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं, मगर जो अच्छी चीजें, उस बच्चे ने एक गुजरते हुए एक घर पे बेल दी और उसके जब कोई बाहर निकला वहां से, तो उसको कहता है यार ये गाड़ी धोना बंद करो, ये तुम इस पानी से गाड़ी नहीं धो सकते. तो आई मीन मुझे इतनी खुशी हुई वो देख के कि हमारे बच्चे जिस तरह अभी आपने बात की कि अवेयरनेस है, लोग इनिशिएटिव लेते हैं. तो इंशाल्लाह एट सम पॉइंट चीजें और बेहतर हो जाएंगी और कुछ हमारे हालात बेहतर होंगे. अगर सर इसके साथ एक लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, कि आपने बात की बिल गेट्स की, जेफ बेजोस की, कि इतना बड़ा फुटप्रिंट है, मगर आप देखें कि ये अगर 90 कंपनीज ना होती तो क्या आज जिस तरह की एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं दुनिया में, क्या वो होती? अगर वो ना होती तो आपके पास बीमारी से लोग मर जाते, वैसे आपके पास सहूलियात ना होती, जो चीज आज हमने इतने अरसे में देखी. आप इस तरह इसको बैलेंस करते हैं? Bill Gates made his money by hoarding patents and by abusing monopolies. And he is doing exactly the same thing with vaccines today. कौन सी बैतरी लेकर आए? सर आपकी कम्युनिकेशन सारी की सारी आज जिस इवन प्लेटफॉर्म से हम बात करें, that cannot be happen. I mean, हम इस क्लाइमेट डिस्कस ना कर रहे होते अगर ये चीजें ना. He could have done all these good things that Bill Gates may have done. He could have done without abusing monopolies and hoarding patents. He's made देखिए, billionaires are policy failures at some level. हम तो उनको heroes समझते हैं ना कि उनको चीज इजाद कर दी है, but they have essentially they have concentrated wealth, which is immoral. $1 billion, when you think about it, is an immoral amount of money for anyone to have. The level of, you see, that $1 billion has to come from people. That capital is extracted and comes from people. And yeah, he's providing technical solutions here and there, but please look at the amount he's extracting from people in the process. Absolutely. There is a balance. I agree that technology is good, but I want to say that technology is not benign. Technology has often been used, just like religion, for political purposes. And we cannot ignore that as well. I just want to point that out. Technology is good, but it can and sometimes is used for political purposes. राफी साहब, आसमा आप क्वेश्चन करेंगे या हम ऑनलाइन काफी क्वेश्चंस आ गए, हम उस तरफ चलें? जी, बस मैं एक जो है वो छोटा सा सवाल है मेरा, कमेंट और सवाल, और फिर हम. अच्छा राफी साहब, जो हम डिस्कशन अभी तक कर रहे हैं, तो मुझे ही समझ में आता है कि आपने बात की थी कि यानी हमने ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ सब बात की, बिल गेट्स की भी हमने बात कर ली, और तो मुझे लगता है कि हमें जिस तरह आपने बिल्कुल आखिर में सोल्यूशन बताया ना कि नॉलेज, एम्पैथी और नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, तो मुझे लगता है कि अब तक जो हम लेट्स से हम रेनेसांस के बाद अब तक जो चीज़ें साइंटिफिकली डेवलप हुई हैं, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और आज जहाँ पर हम खड़े, मुझे लगता है कि हमें सारी चीज़ें बिल्कुल पूरा जो डिस्कोर्स है, जिस तरह हम एक ग्रीक फिलोसफर्स ने जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है सदियों का जो डिस्कोर्स है इसको हमें रीसेट और चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे का अपनी आने वाली नस्लों को बचा सके. अगर हमने ये नहीं किया, जिसकी मुझे विल नज़र नहीं आती, या मुझे नज़र नहीं आता कि अब जो चीज़ें उस तरीके से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज लगता है लोगों को कि अभी भी प्रॉब्लम वो कैटास्ट्रॉफी आई नहीं है, आएगी. लोग कहते हैं पहले डेवलपमेंट कर लें फिर देखेंगे. तो ये मुझे लगता है कि सब चीज़ें हमें रीसेट करने की ज़रूरत है. डू यू एग्री विद दिस? Yes, absolutely. There is a reset needed. Or thank you for mentioning empathy.
बिकॉज ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी वी टेंड टू फॉरगेट हाउ मच आवर लाइव्स एंड सोसाइटी हैज चेंज्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर आपके वालिद साहब किसान थे तो आप भी किसान थे, ठीक है जी। अगर वो कसाई थे तो आप भी कसाई थे। इट वाज you did what your parents did, and if you wanted to improve your life, you know, education तो बहुत कम थी, medicine तो थी नहीं, the average life expectancy was 35-40 years. If you wanted to improve your life, become a little bit richer, put your children into school, इस तरह की चीज अगर आपने करनी थी, you basically had to rely on repetition and efficiency. If you were a blacksmith, you made more steel and you were more efficient at it, and then hopefully in the course of one generation you would have enough money to put shoes on your children on their feet, and within 2 generations put them in school. But repetition and efficiency was basically how you got through things until the industrial revolution. Ab aaj ke waqt mein, I mean all of this accepting war and accepting stealing, theek hai ji, aaj ke dinon mein you can be born poor and die rich without having stolen from anyone and without having oppressed anyone. I know there are plenty of examples of people doing both and becoming rich, but you can lead a very good life within the course of one generation, which was impossible 250-300 years ago, unless you murdered people or killed them, joined the East India Company and made lots of money in India. मगर कहने का मकसद ये कि रेपिटेशन और एफिशिएंसी से एक किस्म की मोरालिटी पैदा होती है, और वो मोरालिटी is everywhere in us today. The fact that we have to show up on work on time, the fact that रट्टे से स्कूल में काम चलता है, the fact that deadlines are still a thing, are all part, ये घड़ी पे हम टाइम जो लगाते हैं, this is all part and parcel of the repetition and efficiency and the morality created by life before the industrial revolution. आप जो रीसेट के बारे में बात कर रहे हैं, आज की दुनिया के अंदर रेपिटेशन और एफिशिएंसी, although it's very important to be on time and it's very important to submit your work on time, मगर आप मुझे बताएं, आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 चीजें, have you done the same thing twice? It's next to everything is a challenge. Everything you set out to do is brand new, and you're meeting new people and facing new challenges to find answers. Repetition and efficiency isn't that important anymore. What is important, और अगर आपने यहाँ कोई भी चीज करने की कोशिश की, or you have to interact and cooperate with other people, इस interaction और cooperation में अब आप डंडा नहीं चला सकते. You have to empathize with people in order to get things done. तो वो repetition and efficiency की morality एक तरफ से खत्म हो गई है, and it's time for a reset. और उस नए moral reset के अंदर empathy must be the middle of how we decide things. उससे आगे आपने फिर development और environment की बात की कि there is a lot of people who think that environmental issues are something that comes after a nation or a society achieves a certain amount of economic development. But in my reading of environmental history and the activist movements around the world, I mean, think of the United States, which is considered clean or partially clean. Now think of countries in Europe that are clean now. After World War I and World War II, they were incredibly dirty. London had repeated incidents, for example, of smog and air pollution until the 1950s, right? And it wasn't, they weren't rich then. They were about to get rich after World War II. America certainly was on the way of getting rich as well. But at that point, at the height of their economic development, while these countries were surging forward with the profits of World War II, it was civil society movements, mostly concerned mothers, ke mare bacche na mare, who took on political movements to take on those unaccountable industries that were polluting their rivers and polluting their air and killing their children for unimaginable amounts of money. And what you have now is that economics and environmental protection have to grow together. There is not a single dirty rich country, right? You only become rich when you're clean. You understand? So it's not as if you get clean once you've become economically developed. The both have to go hand in hand. Otherwise you would have polluted and rich countries, which you don't have. सर मेरे ख्याल में अब हम ऑनलाइन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. काफी हमारे पास क्वेश्चंस आ गए. इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान में रीसेंट एफर्ट्स जिसको काफी हाईलाइट किया गया अब करंट गवर्नमेंट की तरफ से, बिलियन ट्री सुनामी ब्ला ब्ला ब्ला. आप क्वेश्चन ये है कि आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करें कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या वो वैसे है जैसे दिखाया जा रहा है, और किस तरह उसको देखिए. सबसे पहले तफसील में एक तो इस गवर्नमेंट ने ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का ऐलान किया है. इन्होंने कहा है कि
अब नई जो एनर्जी पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है उसके तहत 2030 तक 60% of Pakistan's energy will come from renewables. And in this definition, hydel is part of renewables. तीसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जहां 2030 तक they hope that up to 30 to 40% of the rolling stock of existing vehicles will be replaced by electric vehicles. और चौथी चीज कहते हैं कि अब उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए ये पाबंदी कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल इंपोर्ट होता है वो अब यूरो 4 स्टैंडर्ड का हो। इस वक्त जो पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है वो यूरो 2 स्टैंडर्ड से थोड़ा सा नीचे, making it some of the dirtiest fuel on the face of the earth. So these are the 4 major initiatives that this government is taking addressing the climate crisis and various other environmental issues. These are very good because 10 billion trees, believe it or not, when the history of human civilization is written a few hundred years from now, एक footnote होगा कि एक छोटे से मुल्क ने पूरी कोशिश की थी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, पूरी कोशिश की। It will be noted. But the truth is, you cannot fight climate change by planting trees. You have to fight climate change by reducing carbon emissions, and that you do by changing capitalism, consumerism, colonialism, fossil fuel economy, and so on, patriarchy. So दरख्त लगाने से problem नहीं हल होगा. Yes, it's a great thing to do, but the Pakistani state needs to understand that climate change and the responses to climate change are far more than that. अब याद रखें, कराची में 2 दिन बारिश हुई थी और कराची शहर रुक गया। आप जितने मर्जी दरख्त लगा दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कराची शहर, कराची मेट्रोपॉलिटन के अंदर आप डेमोक्रेसी नहीं लेकर आएंगे, वहां बेटर गवर्नेंस नहीं लेकर आएंगे, म्युनिसिपल सर्विसेज नहीं लेकर आएंगे। Climate response in Karachi is better governance, not planting trees. You see, so while these initiatives are good, when you look at the totality of how climate change is affecting Pakistan, we need more robust governance-based solutions. You see, and it's fantastic that Euro 5 is being introduced, Euro 4 is being introduced. I just wish it would happen more quickly. I think the EV policy is fantastic. It was unfortunate that it was held up with some political wranglings for about a year. And I do hope that the charging infrastructure issues are resolved along with the electric vehicle production. I do hope that. Yeah, अच्छी चीजें, but they are, I feel, not enough to face the governance challenges Pakistan and Pakistanis are going to face with the upcoming climate crisis. शुक्रिया सर। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो आई थिंक आप उसका आंसर कर चुके हैं, मगर जस्ट अगर आप उसको एक दफा फिर समराइज कर दें कि पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस और जो सिचुएशन हमारे मुल्क में, इनको सामने रखते हुए आपको टॉप क्या 3 चीजें सजेस्ट करेंगे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस वक्त या ओवरऑल सोसाइटी को कंसिडर करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज? डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता। मैं इस्लामाबाद में कहीं इसको बेच रहा होता। What are the 3 things I would like to see happen in Pakistan with respect to environment and climate change? Well, I mean, I can tell you things I didn't like seeing. अभी ये pandemic में, for example, not just in Pakistan but around the world, because of the threats to stagnating economies, global governments announced stimulus packages to revive their economies during the lockdown, including Pakistan. एक German इदारा है, it did something called the Green Sustainability Index to examine these bailout packages or these stimulus packages on the touchstone of sustainability. Because I don't know if you know this, but the stimulus packages announced in 2021, when calculated together, are the single largest movement of capital in world history. So much money has never transferred in such a small period of time as it did in 2021. Yaad rakhiyega, during the first lockdown in March, April, the New York Stock Exchange, the New York State Stock Exchange offered a $10 trillion stimulus. Do you know that Alexandra Ocasio-Cortez's Green New Deal has a price tag of only $2 trillion? But the stock exchange of one city offered 5 times of that in a stimulus package. So the Green Sustainability Index reviews all of the stimulus packages around the world in 2020 and found that other than a few countries in the European Union, almost every country failed to invest its stimulus projects. पाकिस्तान के हमने किसको पैकेजेस दिए? हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है जी, हमने एग्रीकल्चर
packages दिए ताकि वही corporate agriculture चले. We have not focused on sustainability. I wish we had done so. It was a remarkable opportunity, once in a lifetime, with such amounts of capital moving, and knowing full well the type of solutions that we need and having them in the market was a huge missed opportunity. So I can't name three, but I wish I could. But I can tell you one thing that I wish I could have changed. सर एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो रिलेटेड है हमारी डाइट हैबिट्स से. क्या ये जो मीट कंजम्पशन है ये इस तरह की चीजें जो हैं उनसे कितना इन्फ्लुएंस होता है और उसको अगर हम चेंज करें तो किस तरह आप देखते हैं? बहुत फर्क पड़ेगा. You would be surprised how much methane is produced by this global corporate meat farming, because cattle has quite a lot of produces quite a lot of methane. Now, instead of methane production, methane is a greenhouse gas. It's 34 times more potent than CO2. Now instead of that, but these animals consume a lot of water, and it's calculated that in order to produce up to a kilogram of beef, you need 15,000 liters of water, because you have to feed the animal, you've got to give it water, you've got to clean it. So it's an incredible amount of resource that's being used essentially 4 लोगों की कढ़ाई के लिए. ऊपर से methane produce हो रही है. So yes, you know, and it's healthy to cut meat out of your diet. I mean, it's increasingly becoming clear that you can have plant-based proteins. And really, you know, where do you think the animal gets its protein from? It gets it from the grass that it eats. So just cut out the middleman and you'll have, you know, a healthy bottom system inside you as well. So we're going to see a gradual shift, especially in the young people. Just like many people in the younger generation don't wear wristwatches and they don't smoke. It's a social change. A mobile phone again, and there's enough advertising about the effects of smoking that people just don't do it. So we're going to see going forward that meat production and actually meat consumption is going to drop, which is worrying because sometimes with the amount of meat we eat in Pakistan, मैं अक्सर समझता हूँ, please forgive me, that it might be the 6th pillar of Islam, because हमें तो गोश्त क्या कहते हैं खाने के साथ खाना पड़ेगा. So many times I end my lectures with people when they ask me what can we do about climate change. मैं कहते तिक्के नहीं खाने आपने, तिक्के बंद करो, because उससे ना सिर्फ कोयला इस्तेमाल होता है मगर you're also using beef. So yeah, I'm completely for eliminating beef out of the diet, or have it once a week. Celebrate with beef. You don't have to have it all the time, and just think about how much water you'll be saving just by that. It's a huge difference you can make. बिल्कुल. इसमें मुझे याद आया यूसुफी साहब की एक लाइन के हमने इस मुस्लिम वर्ल्ड में कभी किसी बकरे को नेचुरल मौत मरते नहीं देखा. बिल्कुल. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है. ये हमारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से तनवीर, और ये रिसर्चर हैं, इनकी फील्ड है हाइड्रोजन एनर्जी से, इस एरिया में ये काम करते हैं. तो टुगेदर विद विंड और सोलर इन्होंने बात की है कि अगर क्या आप देखते हैं ये हाइड्रोजन एनर्जी विल बी अ गेम चेंजर इन फ्यूचर? अगर आप कुछ कमेंट कर सकें इसमें. देखिए, I don't know much about hydrogen energy. Magar, like I said, technology can provide fantastic solutions as long as it's not caught up in politics. Magar, renewable energy के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूँगा, because the challenge with renewable energy isn't the sort of, we have solar products that provide electricity at a very cheap rate, and I'm sure science will be able to come up with a hydrogen solution that's actually very good as well. वो मुझे मसला इतना नजर नहीं आ रहा. मुझे जो मसला नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का ग्रिड है वो 50s और 60s की दिहाई के अंदर लगा था. It's a fossil fuel based grid that provides the major consumer of electricity in Pakistan, which is our cities. It provides them with electricity. और जो प्रोफाइल हमारे शहरों का इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं that you need to have large scale power projects at a distance from the city that bring electricity and then is stepped down through the transmission system to the distribution side. ठीक है जी. तो ये एक hard infrastructure लग गया है that relies on fossil fuel based electricity. जो हमारे renewable solutions हैं, they actually they are, the grid becomes irrelevant to them because these are decentralized polycentric grid systems. आप अपने घर में सोलर लगा लें, बाकी लेस्को शेस्को को भूल जाएं. So in many ways, what I find the real challenge to the adaptation of renewable energies in Pakistan is the transference of the grid system from that old grid. और उसमें याद रखें कितने लोग involved हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी उस grid में involved है. कि उसको transition करना to a polycentristic, decentralized grid is as much of a challenge as finding the new technologies as well. That said, let me add that the Stone Age did not come to an end
because we ran out of stones. बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन है, ये हमारे इसके ऊपर फोरम पे सना उमैर की तरफ से ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, और मेरे ख्याल में इनका जो क्वेश्चन है वो ये कि ये दो अलग चीजें और अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इन दोनों को इकट्ठे, तो क्या आप इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये इंटरलिंक्ड हैं और इंटरलिंक्ड होने के बावजूद ये आपस में किस तरह अलग अलग दो टॉपिक हैं? ये गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ ये ना सिर्फ लिंक है मगर ये मुख्तलिफ भी हैं. यू नो, इफ यू आस्क मी फॉर्मली कि अगर पाकिस्तानी शहरों के अंदर प्लास्टिक बैग की पोल्यूशन का मसला है, तो आई विल प्रोबेबली आंसर एंड से कि हाँ, प्लास्टिक बैग्स और जो कचरा हमें नजर आता है ये जरूर एक माहौलियाती इशू है, मगर इसका हल जो है इज एक्चुअली म्यूनिसिपल गवर्नेंस. अगर हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज या महकमा ठोस मुफलजात अपना काम ठीक करें तो हमें प्लास्टिक नजर नहीं आएगा और उसकी हम फिक्र नहीं करेंगे. यू सी, एंड दैट मे और मे नॉट बी एन एनवायरमेंटल इशू. इट इज एन एनवायरमेंटल इशू, इट्स अ गवर्नेंस इशू. Climate change, many people think, is the adaptation to climate impacts and the mitigation of greenhouse gases, which it is. And a lot of that involves signing international agreements and the sort of lacunas and fine print of the international agreements. That has nothing to do with plastic pollution. Dunya hi aur. And so, yeah, I can see how climate change and its responses are different for environmental management. Magar, when you start talking about climate justice, you'll see how both of them are linked. जैसे मैंने कहा, कराची में पिछले साल जुलाई 2 दिन बारिश हुई थी. गुजर नाला इज अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन दैट इज क्लॉग्ड विद सॉलिड वेस्ट. उस सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए घर गिराए जा रहे हैं और लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है. वो प्लास्टिक का ही वेस्ट है ना. सो नाउ वी हैव अ मिक्स ऑफ क्लाइमेट प्रॉब्लम्स एंड म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन ए क्लाइमेट जस्टिस इशू. सो व्हाइल दीज थिंग्स आर डिफरेंट, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द लार्जर होलिस्टिक आइडिया ऑफ जस्टिस. शुक्रिया सर. हम अब इस वक्त हमारे पास 1 बज रहा है, हमारा 1 घंटे का जो सेशन का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका, मगर अगर आपके पास कुछ और मिनट हो तो मेरे ख्याल में आसिम, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जी जरूर. मेरा राफी साहब एक सवाल है. हम जिस तरह बात करते हैं कुछ सालों पहले, आई थिंक 90s में कभी जो है वो जब यूएन ने इस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंड लेना शुरू किया था, फिर कुछ पॉलिसीज़ आई, कुछ रेजोल्यूशंस इस तरह के अडॉप्ट हुए, फिर उसमें कुछ प्रोजेक्शन की गई कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेंचुरी में इतना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, और फिर उसको हमने देखा कि हमें उसको तेज़ी से रिवाइज़ करना पड़ा. अब हम बात कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, और वो 1.5 डिग्रीज, और इस वक्त देख के लगता है कि वहाँ हम पहुँचने वाले नहीं हैं. तो जी, तो और जिस लेवल पे फॉर एग्जांपल हमने यूनाइटेड नेशंस की, हम उसको कह सकते हैं, अगर वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में प्रॉब्लम ना हो कि वो कंट्रोलिंग या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में उतने वो एफिशिएंट नहीं रहे, क्योंकि पावर जो है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, उन्होंने क्लियरली पेरिस एग्रीमेंट से डिनाई कर दिया, तो वो चीज़ उस तरह नहीं हुई. तो आप किस तरह देख रहे हैं कि अगर एक जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी समझते हैं सॉर्ट ऑफ, और जो बिग कंट्रीज़ हैं, अगर वो इन चीज़ों को, वहाँ भी चीज़ें पॉलिटिकली ड्रिवन हैं, तो फिर हम कब तक इसको रिवाइज करते रहेंगे? और फिर हम अपने आप को, अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो हम पीछे पलट के जब देखेंगे कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हम खुद को ब्लेम कर पाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो है वो हमारे पास इख्तियार नहीं था तो हम कुछ नहीं कर सके और इसमें किसी और का कसूर था? देखिए, टू अ लार्ज एक्सटेंट जो तारीखी तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा की गई हैं, वो ये ग्लोबल नॉर्थ ने की. EU के जो ममालिक हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले 150 साल से हुई है, they have produced greenhouse gases historically, and so there is an argument that there is an equity where they are obligated for reparations for the damages they've already caused. ठीक है जी. मगर देखें कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी थी 1992 में, उन्होंने UNFCCC का कन्वेंशन साइन किया था, greenhouse gas concentrations in the atmosphere were about 350 parts per million. And the ambition was कि अगर ये agreement चलेगी तो ये 380-400 से ज़्यादा नहीं होगा. आज 2021 में 420 तक पहुंच गए. You know, so those agreements have failed because in many ways the global response to climate change has been to divide a threatened planet into 200 different independent countries
and then have them fight amongst each other to come up with a solution. This is a non-optimal framework, because at 420 parts per million, it's not right for Pakistan to say to America, भाईजान ये आपका मसला है, जब हम खुद कोयले के प्लांट लगा रहे हैं जहां renewables की कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है. You see, 420 parts per million, this is everyone's problem, and everyone has to start solving it. So yes, I can see the attraction in blaming the historical inequities in development, but the truth is कि भाईजान अब ये रेल की पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, ठीक है, अब भाईजान काम करें वरना सारे. There's no point just blaming the driver or the owner of the company. Now you have to do something yourself. तो सही. और सर मेरे ख्याल में हम एक आखिरी क्वेश्चन अपनी ऑडियंस से क्या पूछ लेते हैं और फिर हम एंड की तरफ चलते हैं, और ये है कि आप किस तरह देखते हैं कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिनका फुटप्रिंट जैसे कि हमने डिस्कस किया इतना बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मगर क्या हमारी एफर्ट्स ओवरऑल काउंट करती हैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में? अब जितनी मेरे ख्याल में आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, 2 डिग्री जो है, आप प्लीज स्टेबल हो गया जी? जी, अब हमें पता है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस फिजा के अंदर छुट्टी पड़ी हैं, कि अगर गैस प्रोडक्शन आज रोक दें, there's enough greenhouse gases in the atmosphere to lock in a 2-degree warming by the middle of next decade. ये तो हमें मालूम है. And these are dangerous statistics, so we start acting very very soon on this. Unfortunately, इस तरह की activities नजर आती, the type of reductions in greenhouse gas emissions. जैसे आपने साइंस की बात की ना कि बड़ी तब्दीली आई है, ये जो चीज है इससे जो मैं गूगल सर्च करता हूँ, look that's produced in a single, there's a server somewhere charged most likely on fossil fuels responding to my request for a cat video. And unless we stop this type, and this has resulted in an immense amount of greenhouse gas production. It's our small little habits, and now we're on social media all the time, so uski bhi energy production consumption hai. So I'm not seeing the social and societal behavior changes that would be necessary to go towards net zero. और उसके लिए हमें, जैसे डॉक्टर आसिम कह रहे थे, एक रीसेट चाहिए. Not just technological reset, it's a whole reset of our moral system, or what we accept to be right and wrong, where we currently accept economic development as more important than the lives of people dying of air pollution. That moral stance has to be completely overturned, where we say कि तौबा करें कि कोई भी यहाँ किसी किस्म की इंडस्ट्री भी लगाए which affects a single hair on a single child's head. That's the way we should look at the world, right? And okay, fine, we won't have Google search, but we'll be healthy, and our children will have a planet to live on. That's the sort of trade-off I see. बिल्कुल सही. और I mean 100% एग्री जो आपने बातें की. मेरे ख्याल में आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा. राफिज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. इंशाल्लाह हमें कभी यकीन है, जिस हिसाब से अभी भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, हमें डेफिनेटली आपके साथ एक और सेशन करना पड़ेगा. So I'd be most happy. बहुत शुक्रिया आपका to invite me, and to your audience for listening. It really has been a privilege. Thank you very much. इंशाल्लाह फिर बात होगी. सब दोस्तों का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.